Hello, dear students. Welcome back in our today's class. And today we are going to start a new chapter that is carbon compound. Okay, so already related to this topic, related to carbon, you all know all the basics things which are there in the carbon. What is carbon and related to its symbol and all. Okay, you all know that, right? So today we are going to see a very nice things, a very interesting things about its bonding, how the carbon compound form different types of bonds with each other. Okay, so first of all, let's recall what we have you have learned in your last standard. Okay, so in your previous standard you have seen that organic and inorganic compounds. Yes. Okay, so these are the two important types of compounds. Except materials fabricated from metal and glass soil, several other material from the foodstuff to fuels are made up of organic compounds. Okay, तो ये सब जो है it is related to organic and inorganic compounds, which is a part of carbon compound. Okay, then students, you must have already learned about the two types of bonds. Okay, covalent bond and ionic bond. So now you have to remember what is ionic bond and what is covalent bond. So what is ionic bond? Here in this ionic bond, what happened? The cation में क्या होता है? Cation, which means with charge, it consists of positive charge, and anion, which means negative charge. So cation, which means what? Losing of electron, and anion, which means accepting of electron. Okay, for example, you can take an example of ionic compound, that is NaCl. ओके, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें क्या होता है? Na के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज. एंड व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, तो Na जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है. किसको? क्लोरीन को. ओके, विच मीन्स व्हाट? इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. एंड क्लोरीन जो है इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इट कम्स अंडर आयोनिक कंपाउंड. एंड उसमें क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. व्हाट अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड विच मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट. But you have to remember these two types of bonds, that is ionic bond and covalent bond. Okay, yes, now this is all about the basics of organic and inorganic compound. If you read it, then you will understand it very betterly. Now students, in your previous chapter, what I have already told you, that is about ionic compounds. Okay, you have seen that the ionic compounds have high melting and boiling point. तो ऐसे ध्यान में रखना है, आयनिक कंपाउंड को क्या रहता है? उसको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी हाई रहता है. एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एज वेल एज डिजॉल्व स्टेट. मोल्टन स्टेट विच मीन्स व्हाट? फ्रीज. ओके, फ्रीज करते हैं, दैट मीन्स उसको फ्रीज मोल्टन रखते हैं. एंड डिजॉल्व विच मीन्स अगर उसको डिजॉल्व करेंगे, सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो then you have also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of ionic bonds. Okay, यहाँ पे एक टेबल दिया है. So here you can see the melting and boiling points of few carbon compound, that is methane, then ethanol, chloroform, acetic acid. तो इन सब का melting and boiling point कैसा है? That is shown over here. Okay, generally the melting and boiling points of carbon compounds are found to be lower than 300 degrees Celsius. Here also you can see it is lower than 300 degrees Celsius. So from this what we have understood? We have understood that intermolecular forces of attraction जो रहता है उनके बीच में वो weak रहता है, because it having melting point lower than 300 degree Celsius. Okay, now here also this is all about your previous standard. Everything you have learned about the glucose, urea. So that is all about what? About your previous standard. Okay, yes. Now what exactly we need to study? That is now we are going to study. Okay, so here you can see, you all know that the carbon का atomic number कितना है? That is 6.
which means it has electronic configuration that is 2,4. ओके, तो वैलेंस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, दैट इज 4. ओके, यस. एंड हियर यू कैन सी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दिस इज बोरॉन, this is carbon, this is nitrogen, this is oxygen, this is called as what, fluorine, and here it is neon. Carbon कहाँ पर है? At this point carbon has 6 electron. Okay, so what we are going to do over here, if I am going from carbon to the helium, okay, carbon का नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इज 6, हीलियम का 2 है, तो कार्बन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा. ओके, 6 - 2 दैट इज़ 4. ओके, इफ़ I need to lose 4 electron from 6, then what I will get? 2 electron, that is electrons of helium. Helium and neon ये दोनों क्या है? These are called as noble gases. Okay, already we have learned this in your periodic table का chapter. Okay, yes, but if I want to go from carbon to the neon, okay, then what I need to do? I need to add 4 plus so that I will get this 10 electrons. ठीक है, yes. So here in this, the first point what says, it says about here, to attain the configuration of noble gas that is helium by losing one after another all the 4 valence electron. ओके, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मीन्स इट फॉर्म्स वॉट? इट फॉर्म्स कटायन. ओके, येस. सो हियर कटायन फॉर्म हो जाएगा, विच मीन्स कौन सा चार्ज फॉर्म हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो हियर C4+ गेट्स एडेड ओवर हियर. ओके, अगर हम यहाँ से यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे. ओके, सो this is not applicable. Why this is not applicable? Because for this more energy is required. Okay, and because of small size and high net charge. Okay, charge जो है C4+ जो है, what do you mean by C4+? That means 4+ charges are going to add over here. It is C plus 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 and plus 4+, which required more charges. Okay, more charges, which means what? More energy. So this is not applicable over here. Now the second term is, हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन को प्लस करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम नियॉन टू द कार्बन, देन 10 - 6 करना पड़ेगा. दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर भी. Okay, so here you are going to do, that is by accepting one by one 4 electrons in the valence shell. In this method the net negative charge on the carbon atom goes on increasing. Accept करेंगे which means क्या फॉर्म हो जाएगा? अनायन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, 6 को 10 तक लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, so that we will get this electronic configuration. So this is also not possible over here to get a stable electronic configuration of these noble gases. So for that what we are going to do, that is we are going to do about the term that is sharing of electron. तो ये किस में दिखाई देता है? sharing of electron. It is applicable in the covalent bond. Okay, so a covalent bond is represented by drawing an electron dot structure. तो in this method में क्या होता है? A circle is drawn around the atomic symbol of each of the valence electron. Here you can see, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे. Okay, a circle is drawn. This is the circle which is drawn over here. Yes, and वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय अ डॉट और अ क्रॉस. यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ओनली 1. सो आई एम गोइंग टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. देन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इज इंडिकेटेड बाय शोइंग द सर्कल अराउंड देम. तो ये जो सर्कल है ये शो करता है, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड.
is applicable over here. Okay. The electron dot structure is also drawn without showing the circle. तो अगर सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी हम डॉट से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. वन पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स वन कोवैलेंट बॉन्ड. वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पेयर मतलब क्या? दो इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ध्यान में रखना है. ओके. A covalent bond is also represented by a small line joining by the symbol of two atoms. तो यहाँ पे ऐसे ही दिया है तो इनको बोलेंगे लाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. आई एम गोइंग टू टेक हाइड्रोजन का वन एटम एंड हियर ऑल्सो हाइड्रोजन का वन एटम. तो यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो H2 फॉर्म हो जाएगा. येस. एंड आई विल गेट टू इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका और एक इसका. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके इट विल फॉर्म वन बॉन्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड. ऐसे ध्यान में रखना है, दो इलेक्ट्रॉन को मिलके एक ही बॉन्ड फॉर्म होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड. नाउ if I want double bond or if I want triple bond, then what I am going to do? Okay, you all know that ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. So it having electronic configuration, that is electronic configuration 2,6. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स. So here is oxygen and I am going to draw 6 electron over here, 2 and this 2. The another oxygen atom I am going to take over here. Here also same thing, 2 and 2. But now here you can see I am going to adjust these 2 electrons so that I will get a double bond over here. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो सेकंड वाले है वो मिलके क्या फॉर्म करेंगे? वन सिंगल बॉन्ड. दैट मीन्स वी विल गेट टू बॉन्ड्स. टू बॉन्ड्स जब हो गए तब उनको बोलेंगे डबल बॉन्ड. ठीक है. एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऐड ओवर हियर एंड दिस इज ओवर हियर. ठीक है. तो यही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड हियर ऑल्सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस ओनली. नाउ इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5. ओके. तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने रहेंगे? 2,5. दैट मीन्स 5. सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर द 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ वन नाइट्रोजन एटम and the another one consists of 2 over here and 3 over here. That means 5 हो जाएंगे. And this will make one bond, this will make 2 bond, that means double bond, and here this will make third bond, that is triple bond. So 3 bond जब होंगे तब उसको क्या बोलेंगे? It will called as triple bond. हाइड्रोजन में ओनली 1 bond था तो उसको बोलेंगे it will called as single bond. दोन इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. नाउ हियर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है सो इट विल फॉर्म व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव लर्नड अबाउट कार्बन कंपाउंड बेसिक्स. ओके. एंड बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ओके. Go through the video. Thank you.